रिसेंटली मैं अपने वीडियोस देख रहा था यूट्यूब पे, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2 years of doing this show, I'm realizing how sad that sounds. मैं अपने ही वीडियोस देख रहा था इतना बुरा हाल हो गया मेरा। मैं अपने वीडियोस देख रहा था पुराने वाले, and then I realized that I talk a lot about age in my stand-up. I talk a lot about age. In fact, abhi recently na, some 14-year-old kid must have seen my video. He walked up to me and he was like, "Uncle, you are being ageist." I was like, first of all, there are 2-3 generations between us. Who allowed you to speak? Sale, go stand in the corner, finger on your lips. Ageist, sala. So I thought age wage के बारे में बात नहीं करेंगे. But then I turned 50 यार. अरे you have to listen to this यार. You have to listen because it is important. Okay, it is important for a couple of reasons. First of all, there are only 2-3 comedians in this country who are above 50. ठीक है? और वो बाकी सारे मर जाएंगे. हाँ, बस वो मर जाएंगे. तो this content is very unique. Right? Also, I am from the corporate world. तो मैं ना बड़ा intelligent आदमी हूँ. ठीक है? This is my strategy right now. My strategy is that right now, I will do every joke possible about being in your 50s. ठीक है? सारे jokes खत्म कर दूंगा मैं. फिर imagine what will happen to all these तुम्हारे ये बस्सी, उपमन्यु ये सब हैं. When they turn 50, they will have nothing to talk about. Unnaggi. Their careers will drop. Imagine in this, कोई comedian on his 50th birthday would wake up in the morning, open his eyes, अरे वाह, new decade, new jokes, and suddenly the manager would be like, I don't know why the manager would be in the same bed. He'd be like, sir, they have finished all the jokes. Who has? Sir, Anshu. Who else? Just Anshu, sir. You said they. Long story, sir. So let me tell you about 50s here. 50s suck, man. Avoid it if you can. मर जाओ साले उससे पहले. It is ridiculous यार, सब कुछ बदल जाता है पता है 50s में यार. सब कुछ, my looks are changing यार. I used to be very good looking यार. I'm telling you man, I was very good looking. I had an actual jawline यार. Now I have lines. And they're not around my jaw यार. They're under my eyes, यहाँ पे पता नहीं कहाँ पे. It's like my body is underlining all the parts which are fucked यार. I was very good looking यार. I was so good looking, I never made a mistake. People told me, no, it's okay, it's an opportunity to learn. हमेशा होता था यार, I'm telling you यार. देख, you've been not laughing ना, ऐसे कोई serious बैठी हुई है, ये भी बहुत serious बैठी हुई है. I'm telling you man, 3 years ago, if you were at the same show now, you would have been laughing your ass off यार. You know why? Because you wouldn't be listening to my jokes. You would just be looking at me. I was that good यार. ये फेमिनिज्म वाला सेट सुना था तुमने? 3 years back, I used to do this set all across the country. Yeah. I did it all across the country. Not a single woman ever got angry. Yeah. Last week, I did this feminism set. Sale, men got angry. My bedside table, yeah, घर पे used to be so fancy, man. It had books and gadgets and hopes and dreams. Yeah. Now it looks like a bloody mini chemist shop. Yeah. But लोग कहते हैं ना, appendix is a useless organ. I use the appendix to list down my medicines, यार. घटिया joke था ना, you would have been laughing your ass off on this one also, यार. You would be like, तू job बोल cutie. रोज मैं सुबह उठता हूँ, मुझे कहीं ना कहीं दर्द हो जाता है यार. ये तुम सारे यंग लोग हो ना, तुम्हें दर्द होता है, तुम सोते हो, तुम उठते हो, तुम ठीक हो जाते हो. मैं ठीक होता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं उठता हूँ, मुझे दर्द हो जाता है यार. The other day I got up, I had no pain in my body. I was like, fuck, मैं मर गया. My wife was there. I don't know where my manager was. So I told her, I said, pinch me. We've been married for so long, yeah. She took the opportunity. She whacked me on my head. Patak karke, yeah.
thing was she hit me on my head. मेरे knees में दर्द होना शुरू हो गया. I was like, साला ये कौन सा connection है यार? फिर हम डॉक्टर के पास गए, उसने एक्सरे लिया. He was looking at the X-ray. He was like, oh. I was like, भाई साहब आप सुखबीर के गाने क्यों गा रहे हो? I was like, बताओ ना मुझे हुआ क्या है? He was like, नहीं यार, I know this thing is called anterolateral ligament, but इसमें दर्द तो होता नहीं है. आपको कैसे हो गया? ऐसे गूगल कर साले. तुम कभी ऐसे डॉक्टर के पास गए हो जिससे कुछ भी पूछो वो गूगल करता है? नहीं गए? पता है अभी ना मैं और मेरी बीवी ऑर्थोपेडिक के पास गए, ठीक है? जैसे तुम यंग लोग जाते हो ना क्लब हर हफ्ते, हमारी एज में ना हम ऑर्थोपेडिक के पास जाते हैं हर हफ्ते, ठीक है? वी हैव आवर थैंक गॉड इट्स ऑर्थो डे. तो हम ऑर्थोपेडिक के पास गए, हमसे कुछ भी क्वेश्चन पूछते थे ना वो ऐसे गूगल करता था. देन ही वुड टर्न द स्क्रीन, लुक एट मी एंड ही वुड गो पढ़ ले. तो साला ये तो मेरी मम्मी भी कर सकती है यार. एंड ये उस टाइप का डॉक्टर के पास तो 100% गए होगे. ये जोवियल टाइप के डॉक्टर्स होते हैं ना जिनको जोक मारने का बड़ा मन करता है, फनी होने का बड़ा मन करता है. ये उस टाइप का था यार, और घटिया जोक्स मार रहा था यार. मुझे इतनी इरिटेशन हो रही थी ना. एक पॉइंट पे मेरी वाइफ ने उसको बोला कि मेरे को ना आर्म में बहुत दर्द हो रहा है. अरे लाइक मैडम असली दर्द तो दिल में होता है. लाइक साले कॉमेडियन मैं हूं, तू अपना काम करना. तेरे को अच्छा लगेगा तू मेरे शो पे आएगा, मैं तेरी सर्जरी कर दूं. गंदे जोक्स मारता है. मेरे को बहुत इरिटेशन हो रही थी. So at one point he told my wife, he says, give me your arm. My wife went like this. And I was like, रुक जा बहन. She was like, no, only one arm. So she did like this, okay? So he was holding her hand from the other side and he was pressing it backwards, okay, to test for the pain. And he was doing this for good 4-5 minutes. And there was dead silence in his room. Nobody saying anything. 4-5 minutes तक वो ऐसे कर रहा था. At one point even my wife got a little uncomfortable. ठीक है? तो she asked him, she was like, how long will you do this for? And पता है वो एक छोटे हैमर होते हैं ना डॉक्टर्स के पास. He picked one of those hammers, he hit her on the elbow and he goes, knock knock. And my idiot wife goes, who's there? And he goes, ortho. And she's like, ortho who? And he's like, और थोड़ी देर लगेगी. ये अच्छा था. ये वाला अच्छा था यार. Ever since I've turned 15, I've made this a mantra in my life यार. No sudden movement यार. मैं सब कुछ धीरे धीरे करता हूँ यार. जो तू सोच रहा है वो भी सब धीरे धीरे. Like my wife is the most beautiful person in the world, okay? I love her, she loves me a lot, okay? But hypothetically, even if I were to catch my wife cheating on me, na, like if I were to walk into a room and she's with some other guy, na, I would not go mad and start beating up that guy and fight and nah. No sudden movements. There is no point there in losing your wife and also getting slip disc on the same night. Oh, my wife hates this joke, yeah. She hates it, man. The first time she heard it, she got very angry. Yeah. She was like, Anshu, तुम पीटोगे भी नहीं उसको? I was like, that is your objection in the entire scenario? And she was like, disgusting. फिर हमारी लड़ाई हुई. फिर हमने कुछ दिन बात नहीं की. फिर थोड़े दिन के बाद सब ठीक हो गया. फिर 6 महीने के बाद ना हम डिनर करने गए. पता स्टार्टर्स ही आए थे यार, वो फिर शुरू हो गई. She was like, Anshu, tell me something. Why would you not beat Vikram up? तुम्हें समझ आ गया? मुझे नहीं आया था उस टाइम पे. मुझे तो जब वो डेजर्ट आया ना तब मेरी बत्ती जली. अबे विक्रम कौन है बे? Oh man, sick of 50s man. Everywhere I go yaar, everybody is younger than me. यहाँ पे कोई है? How many of you are in your 50s out here? In your 50s, what's your name sir? आशीष. आशीष तुम्हें दर्द समझ आ रहा ना everywhere. तेरे को नहीं आ रहा ना साले 26 साल के कमीने. क्या नाम बताया तूने अपना? Doesn't matter.
मैं तेरे को आशीष और अपना दर्द समझाता हूँ. आप व्हाट्स योर नेम सर? गगन आशीष. मेरा ना हम ना दर्द समझाते हैं तुझे इसका. तेरे को नहीं समझ आ रहा होगा. तू यंग एज में से बैठा ना, क्लियर स्किन, फंक्शनिंग लेग्स, सारे कुत्ते. एवरीवेयर वी गो मैन, एवरीबडी इज यंगर देन. तू इमेजिन कल तू सुबह उठता है, ठीक है, तू एक कॉफी शॉप में जाता है. तू जैसे ही एंटर करता है ना, वहां सिर्फ 5-5 साल के छोटे छोटे बच्चे बैठे होते हैं, ठीक है. फिर तू वहां से इरिटेट हो जाता है. फिर तू ऑफिस में घुसता है, वहां 5-5 साल के छोटे छोटे बच्चे सीनियर पोजीशंस में बैठे होते हैं. फिर तू वहां से इरिटेट हो जाता है. फिर तू वहां से लाउंज बार में जाता है, वहां 5-5 साल के छोटे छोटे बच्चे डांस कर रहे होते हैं. एंड दे आर प्लेइंग ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार. And they are arguing with you, twinkle twinkle little star is better than Pink Floyd. तू समझ रहा है हमारा दर्द? तू दर्द समझ रहा है हमारा? And then one day ना, some 14-year-old drooling piece of shit will walk up to you and say, Uncle, you are being ageist. Chop साले! I want to forget that I'm in my 50s यार. पर मुझे कोई भूलने नहीं दे रहा. एक तो तुम्हें पता है गवर्नमेंट और कॉमेडियंस के बीच में लफड़ा. सारे आई स्टे इन गुड़गांव यार. एवरी टाइम आई एम ड्राइविंग ना, एक गवर्नमेंट ने किया हुआ है यार. मैं बता रहा हूँ, हर 100 मीटर्स के बाद उन्होंने साइन लगा रखा है 50. क्या करें यार. couple of years back हम लोग we shifted into this new apartment complex, ठीक है. तो उस अपार्टमेंट में ना people are like almost all सब ऐसे ही हैं, late 40s early 50s वाले पोस्ट हैं. तो we met these people for the first time and we immediately became best friends, ठीक है. बिकॉज एट आवर एज ना वी डोंट हैव टाइम टू गेट टू नो ईच अदर. वी आर टू एग्जॉस्टेड फॉर दैट शिट. जैसे तुम मिलते हो ना किसी से, यू विल बी लाइक, ओ टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ. एंड तुम लोगों की होती भी ऐसी टुच्ची टुच्ची इश्यूज होती है तुम्हारी, है ना. नो आई वाज बुलीड इन स्कूल, आई स्टिल हैवंट फाउंड लव. वी गाइस कांट डू दैट यार. गगन और मैं मिलेंगे ना, वी कांट डू दैट बिकॉज इफ वी स्टार्ट डूइंग इट, डार्क शिट विल कम आउट यार. Like there's a huge difference between I still haven't found love and I've never found love. तो हम इन लोगों से मिले, हम सब ऐसे मिलने लगे. And I started moving around with these guys. I honestly don't like, I don't understand these 50-year-olds. यार, I'm sorry but I don't यार. यार तो मैं बहुत immature हूँ. Immature तो मैं हुई. But ये अजीब अजीब बातें करते हैं यार 50 साल वाले. Like half of them are into spirituality. Honestly मुझे spirituality का मतलब नहीं पता था यार. I used to think spirituality was about ghosts. Seriously, एक पार्टी पे एक आया मेरे पास. He was like, hey Anshu, I'm thinking of getting into spirituality. I was like, you must, and you must start with conjuring. And the women in this apartment complex are almost same age, late 40s, early 50s. Okay, they have a WhatsApp group, all women's WhatsApp group within the apartment complex. It is called Divas. मुझे लगा दियाज है. अरे ठीक ही नाम रखा है, हो गई उम्र पूजा पाठ की. मैंने अपनी बीवी को बोला ज्वाइन कर मुझे मैसेजेस पढ़ने हैं उसमें. ओह मैन. फिर इन लोगों की ना, ये लेट 40s अर्ली 50s वालों की ना, इनकी ना हाउस पार्टीज होती हैं, ठीक है. बिकॉज ना बाहर नहीं जा सकते ना, ऐसे क्लब में बहुत म्यूजिक तेज होता है तो बात नहीं कर सकते हम. तो इनकी हाउस पार्टीज होती है, ठीक है यार, सब नॉर्मली चल रहा होता है टिल दे स्टार्ट टू डांस यार. एक तो इनको नाचने का पता नहीं क्या शौक चढ़ा हुआ है 50 साल की उम्र में. एंड ऑनेस्टली ना, आई कंसिडर डांसिंग एज अ डेंजरस स्पोर्ट. यार एक पार्टी के लिए एंटर लिगामेंट खराब कर लो, क्या फायदा है. तो मैं नॉर्मली ना इनको साइड में बैठ के ना सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा होता हूँ. ये सारे 50-year-olds डांसिंग है. Like the music is playing at 160 beats per minute. They are dancing at 60 beats per minute. Their Apple Watch is showing 260 beats per minute. मैं ना फोन पे सिर्फ एम्बुलेंस का नंबर ढूंढ रहा था, कोई तो जाएगा साला इसमें से. And in parties में ना, there is always this one couple जिसमें ना wife has all the dance moves. She's doing everything right, ऐसे. वो husband has only one dance move. बीवी बेचारी इसको देख रही होती है, अबे यार चल एटलीस्ट कमाता तो अच्छा है. And then there is always this one guy in his 50s, okay? वो ना ऐसी पार्टीज में ना अपनी बीवी को छोड़ के बाकी सारी बीवियों के साथ डांस कर रहा होता है. बेचारे सारे हस्बैंड वहां पे साइड में खड़े होकर देख रहे होते हैं, अबे यार 10 साल छोटी से शादी नहीं करनी चाहिए थी यार.
I'm telling you, 20-year-olds now, if you don't take anything from this show, clarity, now take one thing. Do not marry anyone who's 10 years elder or younger to you here. Do not. I'm telling you, it's a fucking shit show here. You'll sleep on the same bed, 2 different income tax levels. One will be into sex, the other into Provident Fund, yaar. मत करना यार.